ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। दीवाना जानिए जा पै दीवाना हुए। दीवाना महाराज जी कहते ऐसे होमे वाले आपे तो जिदियां जड़ां दुनिया विच हन ते बहुत डूंघियां हन, बहुत डूंघियां। कहंदे जिन्ना चिर जड़ां नहीं उखड़दे, जिन्ना चिर जड़ां नहीं उखड़दियां उन्ना चिर तो इश्क नहीं हो सकता, क्योंकि तेरियां जड़ां इश्क विच नहीं हन। परमात्मा इश्क है। जदों अपनियां जड़ां उहदे विच लगियां रहिंदियां ते आपां भी इश्क ही निकलदे हां। असल विच हां ही इश्क। Maharaj ji says that in order to realize your true self, who is pure muhabbat, ishq, your roots must be uprooted from the world. And your roots are so deep that just a small stroke to the ego can destroy whatever you have gained on this path, and you would fall back to your roots, because the roots are still there. Not only still there, the roots are firmly planted there. And we remain in the illusion that we have gone somewhere high. No, we haven't. God gives us tests and shows us. He says, look yourself. I don't have to tell you. Ishq. तो दीवाना जानिए। महाराज जी कहते दीवाना हो जाता है बंदा, कमलिया वांगू हो जाता, कमलिया वांगू, क्योंकि उसका नवा जन्म होया। जिन्ना चिर वो कमलापन नहीं आता उन्ना चिर वो पुरानी जिंदगी इस अपना जदों दोबारा जन्म होंदा जी हुण हो रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਅਯੋਧੇ ਹਨ, ਅਯੋਧੇ ਹਨ। Nothing of our old self can remain when we are reborn. All those desires, all those fantasies, they were of the old, false, fake I, ego, egoistic I. And to expect to remain the same and then also be totally new person, reborn, is it possible? We can see it. एक पासे ते सोचना कि मैं आ रहा और दूसरे पासे मेरा दोबारा जन्म हुए, मैं बिल्कुल नवा हूँ, कुछ हो नहीं सकता, cannot happen. Cannot happen. You cannot have feet in two boats. That way you will miss. That way you will have no boat. Not even the worldly boat, nor this boat. माया में दोनों गए, माया मिली न राम. महाराज जी कहते, both you lose both worlds. You lose both worlds. And who made us lose? दोवें दुनिया गवाच जांदियां ते कौन ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ कि अपनी ईगो, अपना मैं. And who is responsible for to use everything, to lose everything? Our ego. Nobody else. He says, do not blame anybody. It is your ego. It's your ego, not somebody else. And once we are reborn, the whole world can poke us and you cannot react. You simply cannot. That new born us, the real us, never reacts. It responds, but not reacts. Responds out of its nature. Mind reacts. असली आपा कभी भी नहीं. हाँ जी, इस चीज़ ਨੂੰ समझना बहुत जरूरी जी. तो दीवाना जानिए जब बहुत दीवाना हो, जब पैर दीवाना हो. Maharaj ji says only the fear can keep us on this path. And he says that fear is a holy fear. वो कहते कि डर तो बिना कभी भी दोबारा जन्म नहीं हो सकता. आपा अपना असली आपा नहीं कभी भी हो सकते. डर का मतलब होंदा कि कोई चीज़ गवाच ना जाए. ठीक है ना जी? डर का मतलब होंदा कोई चीज़ गवाच ना जाए. दुनियावी जिंदगी नूं डर होंदा दुनियावी चीज़ां गवाच ना जान. शरीर भी उहदे विचों एक है. पर इत्थे महाराज जी कहंदे ये वो डर नहीं, ये निर्मल पौ पाया. कहंदे ये पवित्र डर है. पवित्र डर का मतलब कि कोई चीज़ बहुत पवित्र है वो गवाच ना जाए. समझते जी? कोई चीज़ बहुत पवित्र है, ऐस दुनिया दी नहीं है, वो ना गवाच जाए.
Fear, the normal fear is the fear of losing something which always belong to the world, even our bodies, they belong to the time and space. And he said this is holy fear. Holy fear means the fear of losing something holy. Losing something holy. That fear. That fear keeps us walking. That fear keeps us away from our ego. That fear saves us. ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਹਰ ਚਿਤਵੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇਂ। ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। Maharaj Ji says that become so tightly focused at the hirda and don't just feel the divine from a distance. Don't just look at him from a distance. Become one with him. Feel that it's him and you both. Are dancing. Feel that it's you and him. Who are beating in the heart. ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਰਹੀ। God is It's God who is beating in our heart.
It's not the heart beating, it's the God who is beating in our heart. Beating is a very cruel word. Beating? Can ishq beat? Ishq gives life. No. It's ishq who is thriving in the heart. By making it, by keeping it in motion. It's God who is in motion in the heart. And because our true self is permanently attached to Him, to God, so we are also there. In the heart with God, dancing. ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ. Because God is Ishq and God is moving in the heart and we are with Him and we are with Ishq. So there is Ishq in the heart. Heart is not that muscle, it's that power. He is, when He, so it's not that muscle, that handful of flesh is ishq. It is that power which is making it, keeping it in motion. And that's why heart is associated with mohabbat, not the muscle heart. खत सजना दे सुना निमाए सानू खत सजना दे सुना खत सजना दे. Oh, my mother, kindly read me my beloved's letter to me. खत सजना दे सुना निमाए सानू. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ. खत सजना दे सुना की बिरद ते की है जाते ओदी ते कम की करदाया नीमाए सानू खत सजना दे
सोना मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ After reborn, I'm going to be married to him. Please tell me, what is his nature? What is his profession? And what does he do? What is his nature? What's his caste? And what does he do? हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पहचान बिरद सुबह Please recognize your own nature. Don't look at me. Your nature is to be merciful, ever merciful, ever compassionate. की बिरद ते की है जाति उदी ते कम की करदाया निमाए सानू खत सजना दिसना इश्क बिरद ते इश्क ही जाते ओदी ते गुआचा इश्क च रहिंदा His nature is ishq. His caste is an ishq. And he remains immersed, absorbed in ishq. Hirdete. जी परमात्मा और परमात्मा दी रचना का अटूट रिश्ता है जो तोड़िया नहीं जा सकता वो अपनी रचना दे बार बार भी ते अंदर बार भी कोई तरीका नहीं कि उसकी रचना नूं उहदे तो परां कीता जा सके तीसरी उदासी विच महाराज जी जा रहे सन टापूआं वाली जो उदासी जिथे टापूआं च जांदे ते मच्छियां पानी दे विचों वड्डियां वड्डियां छालां मार के उभरदियां बाहर ते महाराज जी मर्दाने नूं कहंदे मर्दाने आ देख ਇਹ ਕੀ ਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ इश्क दे दर्शन during Maharaj's third traveling when he was giving his message to all the kings of the islands and he was traveling
through the ocean. And there were big fishes jumping out of the water, going back into the water. And Maharaji asked his companion Mardana, Mardani, look at this. The fish borns in the water. He lives in the water. The fish lives in the water all his or her life and dies in the water. This is muhabbat. He said, this is muhabbat. You cannot be separated from your beloved. And similarly, the Creator and His creation cannot be separated. The creation is within Him and He is within His creation. His creation is within Him and He is within His creation. Asman Paramatma फैलिया होया, इहदे विच सब कुछ उन्हें बनाया, ते जो कुछ बनाया उहदे विच जो आप वरत रहा. कोई तरीका है जी कि किसी चीज़ नूं आसमान तो परां लैके जाण दा? नहीं. दूसरा जन्म जदों सुनना जी अगली गल कहंदे निर्मल पौ पाया हर दूजड़ी लान सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निरपौ पैमन होए हाँ मैं मैल गवाया बलराम जियो निर्मल पाया हर गुण गाया हर वेख राम हदूरे. निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेख्या राम हदूरे. बंदगी करदियां करदियां उस पै विच रहिंदियां एक दिन आउंदा, एक पल आउंदा जिथे अपने अंदर ते दिसदा ही सी, बाहर हर एक चीज़ विच वो दिसन लग पैंदा. इन्हां अखां नाल नहीं, महसूस होंदा अंदर नूं. हाँ जी, वो चीज़ लफ्ज़ां विच नहीं लियांदी जा सकती. वो अंदर नूं दिसन लगदा कि हर एक चीज़ विच वो बैठा, हर एक चीज़ नाल ओहदा इश्क और किहो जिहा इश्क, और उस एहसास विचों वो जिहड़े गीत आउंदे बुल्ले शाह वर्गियां दे, वो उस एहसास विचों आउंदे. अपने अंदर ते बहुत चिर हो गया सी उन्हों महसूस करदियां. उदों वो गीतां दी जड़ लग रही सी, पर वो गीतां दा बाग उगदा उदों, फुल फल उन्होंने उदों लगदे जदों बाहर हर एक चीज़ विच वो दिसन लगदा. उत्थे, हाँ जी, उत्थे वो हालत है जिथे हाँ दीवाना होंदे, दीवाना होंदे. और दीवानियां दे गीत हैं, इश्क दे गीत. Through meditation and remaining in the holy fear, slowly and slowly a moment comes
when you start recognizing Him in everything, in all His creation, and you see such a muhabbat of His with His creation, and that sight is unbearable. That sight must blossom. Your insides must blossom, and they blossom and the songs started oozing out of you. The songs started oozing out of you. Your insides are blossoming with ishq. And all those, the room means Bulle Shah, and all those, that's where the songs came from within them. Nirmal papaya har gun gaya har vekh ram hadure har atam ram pasarya swami sarbaraya parpure. बाहर देखते कि परमात्मा ही परमात्मा बनया, ये सब कुछ परमात्मा ही बनया. हर आत्म राम परमात्मा, वो अंदरां दा राजा बाहर भी, वो अंदरां दा राजा बाहर भी पसारिया होया, खिलरिया होया, ते बाहर ओदा की ना हरे आत्म राम पसारिया स्वामी सर्वरया भरपूर. ओदा नाम बाहर भी राजा ही है, मालिक, स्वामी. वो अंदरां दा भी मालिक हुआ है, बाहर दा भी मालिक हुआ है, पर ओदियां जमीनां दा मालिक तू है. हाँ जी, देखना जी अपनी हालत होना. हाँ जी. I was saying that he is, the Maharaj Ji says that he is the Lord of the outside and he is the Lord of our inside. And I said, but we are the Lord of his land. कहानी देखना जी, कहानी. जदों इश्क दा सुभाव है जी कि ये बहंदे दरिया वांगू है, ते जे इनू रोक लिया जावे ते ये बीमार हो जाता है. दरिया नू रोक लो, वो बहुत नुकसान करूगा. हाँ जी, फिर ये नुकसान करदा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ. The nature of ishq is to keep moving. That open ओंकार, जो ऊड़ा बंद नहीं महाराज जी ने कीता, ऊड़े दा होड़ा खुला,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੋ ਆਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। Ishq is like a river, and he is Ishq. So he keeps on creating new things, new galaxies, new stars, He keeps on, because that's the nature of the Ishq. And the moment we stop that river of Ishq, we have ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। Yeah, we pushed him, we forced him. So if we force him to stop, if we force him to stop moving, then we are forcing him to act unnaturally. What was his natural nature? We force him to. And what does he do? He becomes sick. And sick ishq is calm. Sick ishq is not only calm. Sick ishq is attachment. Attachment. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਕਹਾਣੀ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, when we force him to stop moving, he takes the form of attachment, and that's the cause. And what is attachment? Roots in the world. And what is that? To remain in the cycle of birth and death. But we become attached to things which are so childish. We don't, and for those childish behaviors, things, likings, we are willing to put ourselves in that cycle of 8.4 million reincarnations. What a bargain, what a bargain. What a bargain. Ishq ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ then we become attached to places, to things, to people, and that is the sick state of ishq. Sick state of our
true self. अपना बीमार हो, असली आपा बीमार होया होया आ है जो दुनियावी आपा है. असली आपा बीमार होया होया इनू दुनियावी आपा आखते. ये है होमे वाला आपा. बीमार हो गया, बीमार हो गया. We must not become sick and remain sick. वो कहता कर इशनान सिमर प्रभु अपना मन तन पे अरोगा. महाराज जी कहते सिमरन कर, ते सिमरन करन नाल तेरा इशनान हो जाना, फिर तेरी सुरती, तेरा शरीर ये अरोग हो जाने, सेहतमंद हो जाने. तू हुण बीमार है, तू हुण बीमार है. He says you are sick now. Do meditation and through the divine's touch. The divine's touch is going to make you take bath in the holy divine. You will become healthy. You and your body will become healthy. Right now you are sick. Body, what is the body will? You will become tan man pe aroga. Our consciousness will become healthy, that we understand. What does it mean that your body will also become healthy? Gal hui si. Senses? The senses, your eyes, ears, tongue, nose, hands, they will become pure too, holy too. हाँ जी, बहुत जरूरी जी ਆਪਾਂ ਹੁਣ हर वक्त देखना कि मेरे ख्याल किस जगह ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ. Now we must please keep watching where from my thoughts are coming. Are the roots of my thoughts the world, my world, or the roots of my thoughts are my beloved? Or the roots of my thoughts is my beloved? And we must not please remain rooted in the world. Every day it will become harder and harder to uproot ourselves, and the possibility of rebirth will keep diminishing and diminishing as we start becoming more and more permanently attached to the world, to the things, places, people. And एक दिन एक रुख नालों एक हरिया पत्ता टूट गया. जे आपां परमात्मा नूं महसूस कर रहे हाँ, जे आपां अनहद शब्द सुन रहे हाँ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? If we are present, if we are feeling the divine, if we are hearing the celestial music, if we are hearing the kirtan, if we are doing part while being totally present, if we are walking if we are present while walking, if we are present while looking, if we are present while hearing, then our roots are in the divine. But what does it mean if we are present while looking? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। सोने का बिरख, we are the leaves on the tree of God, and any leaf, when it is separated from the God tree, it keeps flying and flying with the wind, and becoming dried and dried and dried, and one day totally dried. So that's what happens when our roots are not in Him. फिर वो दुनियावी जिंदगी ਲਈ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਾ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਦ ਜੀਵਨ, ਸਦ ਜੀਵਨ। If our roots are in the world, we cannot escape death, we cannot escape reincarnation. But if our roots are in Him, we cannot die. We will exist as Ishq. And what a celebration would be that. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਪੱਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ
ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਉ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ